dear students. Today we are going to discuss about constraints in MySQL. See, what is constraints? So constraints in MySQL is basically refers to a condition or a check that is applied to a column or set of columns in a table. What do I mean by that? Suppose I want to create a table, it's a student table, and I want to make a column roll number, name and marks, right? And I want the roll number should not repeat. It should be unique for each and every record. So in that case, I need to put a condition on the column roll number so that it will not repeat anyways. So that is what called constraint. And that constraint we all know that is what primary key. So primary key will help you to keep the check. Each and every record should be unique. So basically, constraints are applied to maintain data integrity, and that is why it is also known as integrity constraint. We all know what is data integrity. That is, it is used to maintain accuracy and validity of the data. So data integrity helps you to maintain the accuracy and consistency, that is validity of the data in the table. So constraints are applied to maintain data integrity. That's why it is also known as integrity constraints. And there are different type of constraints in MySQL. Few of them are given over here. See, basically these constraints are helps to, or you can say it ensures database integrity. Thus, it is also sometimes called as a database constraint. Right? Now, let us have a look on this different type of constraints: unique constraint, primary key constraint, default constraint, check constraint, foreign key constraint. So these are the different type of constraints, and we'll have a look one by one. First of all, let us see there are different methods to apply constraint on the table, right? On the column. So there are different methods. One is column constraint method, and the next one is table constraint method. So what does this table constraint and column constraint means? So if you are applying constraint only to the individual column, then it is called column constraint. If you are applying on group of one or more columns, then it is called table constraint. We'll just have a example, and then we will be able to understand what is column and table constraint method. So see, you know how to create the table, that is create table name, column name, data type, size, and after size what we are putting the constraint name. Suppose if you want to put primary key, write down primary key. If you want to put not null, put not null. If you want to put default, then write default. Because I am applying the constraint on individual column, that's why it is called as a column constraint method, right? But if you want to apply the constraint together on the one or more column, then we can say it is a table constraint. Let us have a look. This is two table is given over here, student table and guardian table. And we want to apply these constraints, primary key, not null, foreign key constraint, right? So let us see how to apply constraint. So what we did, create table guardian and GID char 5, and here I am writing, here only I am writing primary key. So I am applying the constraint on the column, individual column, isn't it? GID पे आपने primary key लगा दिया, G name पे आपने not null लगा दिया, G phone पे आपने unique लगा दिया. It means you are applying constraint on individual column. That's why it is called column constraint, right? And see now the table constraint method. Here, while creating the table student, what I did, instead of writing roll number entry here, if I want to make a primary key, I have not written over here, and I am writing at the last primary key, and then this column पे करना है roll number. So this is what called table constraint method. यानी कि आप individually column पे नहीं कर रहे हो, आप last में जाके बता रहे हो किस column पे आपको लगाना है. Then it is called your table constraint method. So this is also table constraint. This is also table constraint method. Here we have tried to apply foreign key on the column GID, foreign key on the column GID, right? And these two tables will interrelate with each other. So we are applying foreign key. So we will discuss this syntax later on. Now, if I will just start explaining right now, it will be confusing, right? So just I am here to explain this is what column constraint
and this is what your table constraint method, right? So where table constraint and where column constraint, let us have a look, right? If you want to apply the constraint on individual column, no worry, you just write your constraint name. That's it. But the condition where we want to apply the constraint on more than one column, suppose दो column के ऊपर unique की लगाना है, तो मैं बार बार ना लिख के मैं एक साथ भी लिख सकती हूँ, right? Or the special thing, just see, if I want to create or if I want to put a constraint primary key on two columns, रोल नंबर पे भी और स्टूडेंट नेम में भी लगाना है मुझे, बट आपको पता है प्राइमरी की तो एक ही होती है, एक से ज्यादा अप्लाई कर ही नहीं सकते आप, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगा ही नहीं सकते क्योंकि एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है, तो इस केस में आपको ये एरर दे देगी। और यहाँ पर आपको कौन सा मेथड हेल्प करेगा, दैट विल हेल्प द योर टेबल कंस्ट्रेंट मेथड। तो यहाँ पर आप प्राइमरी की लिखिए और रोल नंबर और स्ट्रिंग को एक साथ आप प्राइमरी की बना दीजिए, दैट इज व्हाट, ये एक ही प्राइमरी की है, राइट? किस पे है, दोनों को कंबाइन करके। सो हियर टेबल कंस्ट्रेंट मेथड इज वेरी वेरी यूजफुल। सो दैट इज व्हाट टेबल कंस्ट्रेंट मेथड एंड द your column constraint method. Now let us have a look one by one. First of all is first constraint is your not null, and not null, as the name says, ki it will, if you are applying not null constraint in any of the column, then the null value will not be allowed. You will not be able to enter the null values in the column. Let us have a practical look of this. Yes, students, let us create a database. Let's say database name is A. Okay, it is already exists. So let me create another database. Let's say A1. Right? Okay, query okay. Now let us create a table. Let's say student. And let me create a table without constraint first. So what I did, roll number, I said int, name, I said varchar 20, and let's say marks, let's say int, right? So, okay, I have not selected the database. So first of all, I have to select my database, that is I have to open my database, and then only I can create table or any other task, right? So now query is okay. Now let me show you the structure of the table. So I said describe student, and you can see here the null values are allowed. Right now null is yes, it means the null values can be entered in this table, right? So if I say insert into student values, and if I say 1, I said Sudha, and I said null, I don't know the marks, so null, it's allowed, and you can see the table. So null values are allowed, right? Suppose if I said, okay, no, I want to put a constraint on this, that is what not null constraint, कि मैं इसको null ना लिखता हूँ, right? So let me drop this table first, and I will make new table again. To drop table student, and let me create once again. So create table student, और ये जो marks है ना, इसको मुझे not null करना है, यानी कि मैं इसको खाली नहीं छोड़ना चाहती, right? So what I did, simply what I did, create table student, roll number in, name varchar 20, marks in, और इसी के आगे आपने क्या लिख दिया, not null. So this is the way to put the constraints on the column, right? Because I am putting the constraint not null on a single column, on an individual column, that's why it is called your, this is, which method is this? This is a column constraint method. ठीक है? अच्छा, not null यहाँ पर आपने लगा दिया। एक काम करते हैं, इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड को, और अब मैं चाह रही थी कि इंसर्ट करूं और इसके अंदर नल डालूं। So let me check whether it will be allowing for me or not.
So see, it is simply writing, it is giving you error that marks cannot be null. The reason why it is doing so, because we have applied what constraint? Not null constraint. That is the condition we have applied कि अब आप इसको not null, मतलब आप इसको null इसमें नहीं डाल सकते, ठीक है? अच्छा, this is the column level constraint, right? If you want to put table constraint method, if you want to use table constraint method, see, I'm again dropping my table, drop table student, right? And I will create table again, create table student, and I said roll number int, right? Name varchar और मार्क्स दे दिया मैंने int, ठीक है? और मुझे अब क्या करना है, कौन सा कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है? नॉट नल अप्लाई करना है। किस किस पे करना है? सपोज मैं रोल नंबर को भी नहीं खाली छोड़ना चाहती, नेम को भी खाली नहीं छोड़ना चाहती, ठीक है? दैट इज व्हाट आई अप्लाइड, एंड ऑफ कोर्स दिस ब्रैकेट इज फॉर दिस, एंड आई वांट टू क्लोज दिस ब्रैकेट आल्सो, सो आई पुट दिस also, right? So I hope you understood what is not null constraint. So now let us see another one, that is unique constraint. So what is unique constraint? As the name says, this constraint ensures that no two rows have the same values, right? तो कुछ आपको प्राइमरी की तरह ही दिख रहा होगा कि no two rows have the same value. Almost primary key and unique constraints both are same in the way that they both don't allow the duplicate values in each and every record, right? But there is still some difference that we will discover right now. So unique constraint, let us see practically what is unique constraint. So unique constraints, let me again here use my, what I made, let me use A1. Let me show all the tables, what tables are here, okay. This is empty, let me create table, let's say student, and what I want to do is कि roll number मेरा क्या होना चाहिए, unique होना चाहिए, और data type और size लिखिए, of course roll number int, और before putting the comma you should put the unique constraint, ठीक है? फिर मैंने कहा नेम मैंने कहा varchar, और नेम का साइज दे दिया 20, and I want this also to be unique, right? So I did unique. Then marks, let's say int, and that's it. So what is this table will do? This table, in this table we have two constraints here. Two constraints on two columns, I mean to say, in the roll number column and the name column. और दोनों में आपने कहा है कि यूनिक होना चाहिए, यानी कि कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए, ना रोल नंबर में ना नाम में. तो let us check whether it is allowing me to do so or not. So insert into student values, और मैंने कहा यहाँ पर 1, or let's say Subha, right? And let's say 98 and that, right? Let me put same value whether it is allowing me to do or not, right? So मैंने सिर्फ रोल नंबर को सपोज चेंज कर दिया है और नाम वही रहने देगा. देखिए आप, it is giving me error, duplicate entry Sudha for key student dot name. It means आपने दो कॉलम पे लगाया था, तो एक में तो आपने अलग वैल्यू डाल दी, बट name में you are putting the same value, so it is going to give you the error, because it is only because you have applied constraint on that, and that is what it is maintaining data integrity, right? So this is what the unique constraint is. Suppose I want to make one more column table, let's say student 1, and I say roll number int, name varchar 20, right? And I did phone number, let's say big N 10.
right? And what else I want to do is I want to put unique constraint on roll number and let's say name. Let us check. So this is what I want. This ये कौन सा मेथड हुआ मेरा? That is table constraint method, है ना? ये वाला constraint क्योंकि मैं हर कॉलम पे अप्लाई कर रही थी. This is what column constraint method. Here I have applied at the last. That is what unique और जिस कॉलम पे मुझे लगाना था, I have put the column name over here, and this is what called your table constraint method, right? So these are the two ways which we have already studied: column constraint method and table constraint method. चलिए, एक तो मुझे समझ आया है कि मुझे क्या करना है, इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं मैं डाल सकती. एक और चीज चेक करना चाह रही थी मैं कि क्या मैं इसके अंदर नल वैल्यू डाल सकती हूँ क्या. इससे पहले मैं आपको इसका डिस्क्राइब करके दिखा देती हूँ. सो मैंने कहा डिस्क्राइब स्टूडेंट एंड लेट्स सी what it is saying. Null values are allowed as these two columns are unique, isn't it? ये constraint आपने unique लगा रखा है, but null value कह रहा है मैं allowed करता हूँ. यानी कि आपको एक चीज समझ आई होगी कि आप एक कॉलम से ज्यादा पर भी unique constraint लगा सकते हैं, और दूसरा क्या कि ये null value भी allowed करता है. Let us check. So I said insert into student, right? Values. I said 1, I said Sudha, I said row, phone, okay, marks, it is marks, so I said 45, right? Roll number क्या कह रहा है? Duplicate entry 1 because I've already entered 1, I think. Student मैंने table ले लिया है, let me say it is student 1, ठीक है? Okay, I have entered wrong table name, that's why it was giving me error, because my table name was student 1. Okay, 1 is allowed. Let us say another one. So let me say roll number is 2. ठीक है, सेम तो वैल्यू आप एंटर कर नहीं सकते, उसके लिए हमने चेक कर लिया है. So let us say Manisha, or let me say null. I want to put null, right? So मुझे नाम नहीं पता रोल नंबर 2 का, so that is what I did. I put roll number as 2, name as null, and check. Yes, query okay. So null values are allowed in unique constraint. Let us have one more look, one more null value. So let me say roll number is 3. Okay, again null value. See, it is again aligned. So it means unique key allow you to enter null values, but and one thing more, unique key can be applied on more than one column. That is what your unique constraint is. Okay? So unique constraint can be applied on multiple columns. आप एक से ज़्यादा कॉलम पर एक साथ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? और कुछ प्राइमरी की तरह ही है, क्योंकि वहाँ भी आपको यूनिक वैल्यूज डालनी होती थी, यहाँ भी यूनिक वैल्यूज डालनी होती है. और लेकिन यहाँ पर आप यूनिक जब अगर कंस्ट्रेंट बनाते हैं तो उसका आप नल वैल्यू भी डाल सकते, ठीक है? Now let us have a look on primary key constraint. So this constraint declares a column as the primary key of the table, right? It declares what column as the primary key of the table. This constraint is similar to unique except that only one column or one group of columns can be applied in this constraint. जैसे आपने यूनिक में एक से ज्यादा कॉलम पे यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दिया था, बट प्राइमरी की कंस्ट्रेंट आपको वो नहीं करने दे. Let us have a look. So let me drop this table so that it will not create any problem for me. So I've just deleted this table, drop table student. Let me delete student also. Okay. Now let me create table student, right? And what I did, roll number 8. और यही आप अगर प्राइमरी की लगा देते हैं तो ये कौन सा कंस्ट्रेंट हो जाता है? दिस इज व्हाट योर कॉलम कंस्ट्रेंट. चलो नीचे कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो. सो रोल नंबर 8 एंड आई सेट प्राइमरी की, राइट? चलो मैं चाहती हूँ कि नेम भी रिपीट ना हो, तो क्या मैं नेम को प्राइमरी की बना सकती हूँ क्या?
मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ये बना सकती हूँ क्या? It will give me error because I can't make two column. I can't apply primary key on two columns. एक टेबल में एक साथ दो प्राइमरी की नहीं हो सकती, एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, ठीक है ना? तो ये मैं चेक करती हूँ और सी इट इज गिविंग मी एरर, मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइन। तो आप यहाँ देख रहे होगे आपको एक से एक ही प्राइमरी की अलाउड है एक टेबल में बनाना, तो आपने ये दिस मेथड इज रॉन्ग। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी कैन यूज टेबल कंस्ट्रेंट मेथड। अगर मैं चाहती हूँ रोल नंबर और नेम एक साथ, दोनों एक साथ मिलके प्राइमरी की बने, ठीक है, वन सुधा आएगा, टू सुधा आ सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों बार वन सुधा नहीं आएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि ये दोनों टेब कॉलम एक साथ प्राइमरी की बना रहे हो, ये दोनों टेब कॉलम का डेटा एक साथ मिलके यूनिक होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये, ठीक है। सो हाउ टू हियर टेबल कंस्ट्रेंट विल हेल्प यू आउट। सो व्हाट यू विल डू, create table student, right, and roll number and name varchar, और आपने दिया marks and, और अब अगर आप चाहते हो दोनों पे प्राइमरी की लगाना तो आप ऐसे लिख सकते हो, प्राइमरी की किस किस पे लगाना है, रोल नंबर पे लगाना है और नेम पे लगाना है। सो दिस इज where you can use table constraint method, right? And this is how you have made your table. And see, these both are primary key now. Null values are not allowed. Okay? Null values are not allowed. So this is what primary key constraint, right? So if I want to insert into student, I said one, Sudha, and let's say 97 marks. What it is saying? One Sudha. Oh, I just entered wrong syntax. Insert into Sudha and use. Right, query okay. Okay, let me check my data. Select star from student and this is what my data is. Right? तो आप अगर आपने दोनों पे मिला के प्राइमरी की लगाया तो दोबारा से अगर आप यही डेटा डालोगे तो आपको अलाउड नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि आपने डुप्लीकेट एंट्री करी। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर नाम चेंज कर दूं, वन मैंने कहा राम, देन इट विल अलाउ मी टू एंटर, राइट। सो यानी कि आपका जो डेटा होगा वो यूनिक होना चाहिए दोनों कॉलम को मिला के, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन एंटर द डेटा इन प्राइमरी की फॉर्म, राइट। अच्छा, एक बार नल के लिए भी चेक कर लेते हैं क्योंकि यूनिक वाला तो नल ले रहा था, क्या ये नल ले रहा है क्या? लेट अस सी। सो व्हाट आई डिड, वन नल, व्हाट इट इज सेइंग, नेम कैन नॉट बी नल, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जब आप डिस्क्राइब कर रहे थे टेबल को तो आप देखिए ये नल वैल्यूज को अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर, और यूनिक में क्या था, ये यस थी, तो इसीलिए आप वहां पे नल वैल्यूज डाल पाते, तो प्राइमरी की में आप नहीं डाल पाए। सो दिस इज प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड not null, unique and primary key constraint. In the next video, we'll discuss default and check constraints. So I hope you have understood. If any doubt, you can just ask. Take care, all of you.